Students, today we will discuss digestive system of Amphioxus bronchiostoma C. lancelet. The digestive system having two parts. First is alimentary canal, digestive tract, or it is gut, and second part is digestive glands. Alimentary canal of Amphioxus, that is complete straight tubular structure, and it is complete because it has both openings, mouth and anus. The alimentary canal, that is divided into three regions: foregut, midgut, hindgut. These are foregut, midgut, hindgut. Foregut is also named, it is stomodium, midgut that is mesentron, and hindgut that is proctodium. Both fore and hindgut, these are ectodermal in origin, lined by cuticle, but this midgut, it is mesentron, it is endodermal in origin and it is without any cuticle. सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बच्चों फोरगट. क्या कहा हमने? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, लाइंड बाय क्यूटिकल, इट हैज थ्री पार्ट्स. फोरगट हैविंग थ्री पार्ट्स: माउथ, ओरल हुड एंड वेस्टिब्यूल, बक्कल कैविटी. माउथ दैट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस ओरल हुड, जो नीचे की तरफ देख रहे हैं, वेंट्रली, डोर्सली, वेंट्रली, लेटरली. This oral hood possesses about 11 pairs of tentacles initially, but as age increases, the number of oral tentacles also increases. This oral hood, its margins as well as the oral cirri, these are supported by the gelatinous skeletal rods. क्या कहा हमने? मेम्ब्रेनस फोल्ड, दैट इज ओरल हुड. उसके सेंटर में हम बच्चों देख रहे हैं माउथ देख रहे हैं, देन दिस अंदर कैविटी देख रहे हैं, माउथ, द बक्कल हुड इंटरनली, द कैविटी इज बक्कल कैविटी, द वेस्टिब्यूल, द ओरा कैविटी, वेस्टिब्यूल. दिस स्पेस इज ओरल कैविटी. ये देख रहे हैं बच्चों वेस्टिब्यूल, उसका सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके मार्जिन्स ऑफ ओरल हुड, उस पर देख रहे हैं टेंटिकल्स देख रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ, सामने की तरफ, द रोस्ट्रम वेल सपोर्टेड बाई नोटोकोड, एंड द मार्जिन्स के साथ साथ देख रहे हैं हम टेंटिकल्स, द मार्जिन्स प्लस टेंटिकल्स, these rod like structures, these are skeletal structures, gelatinous rods which provides mechanical strength to the margins as well as oral tentacles. हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज वेस्टिब्यूल, बक्कल कैविटी. इन दैट बक्कल कैविटी टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर फाइनल एग्जाम. फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द मिडल रीजन ऑफ दिस वेस्टिब्यूल, इन दिस, इसके मिडल पार्ट में क्या देख रहे हैं हम? दिस स्ट्रक्चर फॉर फाइनल एग्जाम, इट इज व्हील ऑर्गन, रोटेटरी ऑर्गन और म्यूलर्स ऑर्गन्स हैविंग, ये देख रहे हैं हम, उसमें दिस आउटग्रोथ अबाउट 6 or 8 finger like outgrowths, projections are there, or in their center the grooves are there, these are lined by cilia, and this central outgrowth, it is largest, and this central outgrowth that possesses a groove that is important for, again for final exam, that is head-shaped groove, and it ends in a pit, head-shaped pit, and this is a sensory organ. So this central part, it is known as wheel organ, rotatory organ, Mueller organ, that its cilia, beating of cilia maintains a vortex of water. फॉरवर्ड फ्लो करना है वाटर को आगे, तो बच्चों कहाँ? फेरिंग्स की तरफ. देन इन द पोस्टीरियर रीजन, मिडल रीजन व्हील ऑर्गन, इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ दिस बक्कल कैविटी, सेंट्रल रीजन व्हील ऑर्गन एंड द पोस्टीरियर रीजन, पीछे की तरफ देख रहे हम. देन अनदर ए मेम्ब्रेनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इन कंप्लीट रिंग, इट इज वेलम, and that velum possesses about 10 to 12 pairs of tentacles having chemoreceptors. ये देख रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर. फिर वेलम का फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वेलम हैविंग 10 to 12 pairs of tentacles, and in its central region aperture is there, that aperture is enterostome. This enterostome leads in the pharynx.
This diagram shows complete structure of alimentary canal of branchiostoma. It is divided into three parts, very clear in this diagram. First part is foregut stomodium. Four part means alimentary canal का शुरू का part, having stoma means mouth. This foregut is divided into three parts. First mouth हम already discuss कर चुके हैं बच्चों. This second part buccal hood डिस्कस कर चुके हैं, उसके साथ ओरल टेंटिकल, एंड इन द सेंटर ऑफ दिस ओरल टेंटिकल माउथ इज प्रेजेंट. देन द लार्ज स्पेस इनसाइड द बक्कल हुड, दैट इज वेस्टिब्यूल बक्कल कैविटी, डिस्कस कर चुके. इट इज दीज माउथ, बक्कल हुड एंड वेस्टिब्यूल आर पार्ट्स ऑफ फोरगट. This particular part, it is ectodermal in origin and it is lined by cuticle. Then this second part is midgut. In this midgut, again three parts. First pharynx, just behind this pharynx, very small part, that is esophagus food pipe. Then this narrow part is, elongated part is tubular part having lateral ciliated patch for the conduction of food and mucus particles in forward direction. That part represents intestine. Means midgut, mesentron, again it is divided into three parts. Pharynx, this maximum part of the alimentary canal, the largest, widest part of this alimentary canal is pharynx. Just behind it, esophagus, and the last part of midgut, that is intestine. Means midgut, that is endodermal in origin, no cuticle, and उसके तीन पार्ट हमने बताए. pharynx, अब डिटेल से डिस्कस करते हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर फाइनल एग्जाम इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और pharynx अलग से क्वेश्चन सेट होता है. तो दिस pharynx हमने बताया लार्जेस्ट पार्ट, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, हैविंग U-shaped gill slits. In this pharynx, ये देख रहे बेटे कलर डायग्राम से, U-shaped gill slits about 150 to 200 in each side, average about 180, means 180 pairs of gill slits on both sides of pharynx. These gill slits later on मैं डिस्कस करूंगा, आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करेंगे तब. These gill slits U-shaped structures are separated by gill bars. ये देख रहे हैं बच्चों, these partitions are gill bars which are of two types. प्राइमरी gill bars, प्राइमरी gill bar देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं नीचे की तरफ ventrally, these are forked structures. Bifurcation देख रहे हैं, but these straight structures are secondary gill bars. Means in the pharynx region about 180 pairs of gill slits which are U-shaped structures, and these are well separated by primary secondary gill bars. ये देख रहे हैं बच्चों, गिल बार्स को मैं अलग से ले रहा हूँ, उनके स्ट्रक्चर्स करवा रहे हैं. दिस इज सेकेंडरी गिल बार, दिस इज प्राइमरी, जो लार्ज साइज का स्ट्रक्चर देख रहे हो. हैविंग फ्रंटल सीलिया, सामने की तरफ देख रहे हैं, द स्ट्रक्चर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं. द बैंड ऑफ फ्रंटल सीलिया, लार्ज साइज के सीलिया. साइड में देख रहे हैं, दीज आर लेटरल सीलिया, एंड दीज गिल बार्स आर वेल नरिश्ड बाई the blood vessels, well supply of blood vessels in both primary and secondary. These are blood vessels. The mesodermal region having mesodermal solid core, and this core having skeletal rod. हमने पहले भी करवाया था जब इट skeleton करवाया तब, कि skeletal rods सपोर्ट करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे गिल बार्स को. आज वो लेक्चर कवर कर रहे हैं, ये देख भी रहे हैं बेटा कि this mesodermal core having this blood vessel, and उसके बाहर देख रहे हैं हम skeletal rods are there. But in case of primary gill bar, another structure is, this is coelomic canal. The important point for final exam is the difference between primary and secondary gill bars. The primary gill bar that lie between प्राइमरी गिल स्लिट्स, हमने कहा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे गिल स्लिट्स.
the primary gill slits having primary gill bars. In secondary gill slits, the secondary gill bars are present. Difference क्या हुआ इसका सबसे important? In case of primary gill bar, coelomic canal is there, but in case of secondary gill bar, no coelomic canal. बहुत क्लियर कट डायग्राम से दिखाई दे रहा है द स्ट्रक्चर. द प्राइमरी गिल बार द वेंट्रली नीचे की तरफ देख रहे हैं, इट इज फोर्क्ड स्ट्रक्चर, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी गिल बार दैट इज स्ट्रेट विदाउट एनी फॉर्क. द फेरिंग्स रीजन, ठीक है, उसके जस्ट बिहाइंड दिस वेरी स्मॉल, दिस वाइड पार्ट इज ईसोफेगस. देन दिस intestine having lateral ciliated patch, the beating of cilia which involve in the movement of food particles and mucus in forward direction. Then the last part is hindgut. Hindgut, proctodium. हमने कहा foregut having mouth, so it is stomodium, but this last part having anus, so it is proctodium. Proctodium, the part having anus, means both openings are there, anus, and in front region mouth is there, means complete alimentary canal in case of branchiostoma. This hindgut, again it is divided into two parts, rectum and anus. This rectum it temporarily stores, किसको store करेगा बेटा? The fecal matter को, undigested food, fecal rectum. यहाँ देख रहे हैं दिस एंटायर फेरिंग्स को, कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ बैंड्स देख रहे हैं. इन फ्रंटल रीजन दिस बैंड इज, दिस मस्कुलर फोल्ड इज, इट इज पेरीफेरेंशियल बैंड, मीन चारों तरफ से उसको कवर कर रहा है. दिस ये देख रहे हैं. उसके ऊपर की तरफ डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड अनदर बैंड इज देयर. दिस बैंड इज एपीफेरेंशियल, फेरिंग्स से ऊपर, और इट मे बी नेम्ड हाइपरफेरेंशियल, हाइपर सुप्रा, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंड डोर्सल साइड में, सो इट इज डोर्सल लैमिना. फॉर ईच फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन दैट इज डोर्सल लैमिना, मीन्स डोर्सल साइड में द चादर, द कवर इज देयर, दिस मेम्ब्रेनस कवरिंग इज डोर्सल लैमिना. नीचे की तरफ देख रहे हैं वेंट्रल साइड में, वो डोर्सल बताया हमने, इन दिस वेंट्रल साइड अगेन बैंड इज देयर. कहाँ? नीचे. ये फ्रंट में बताया था पेरीफेरेंशियल, ये ऊपर बताया हमने एपीफेरेंशियल. इन लोअर, इन वेंट्रल साइड दिस इज हाइपोफेरेंशियल बैंड. अनदर क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम, दिस इज एंडोस्टाइल. मैं आके कवर करूंगा इसको. और उसी के साथ देख रहे हैं अनदर डाइवर्टिकुलम, इट इज मिड गट डाइवर्टिकुलम. मिड गट डाइवर्टिकुलम रिप्रेजेंट्स लीवर, और इट इज हेपेटिक सीकम. इट इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड. Another important topic of digestive system of Amphioxus. In the pharynx, the lower region consists of endostyle, or it is hypopharyngeal band. It is a gutter-shaped glandular and ciliated band that is present pharynx, उसके mid ventral region में present है. Dorsally, epipharyngeal band having a groove that is epipharyngeal groove, and the pharynx in its lower ventral region, central region के अंदर देख रहे हैं बच्चों, this shallow gutter shaped structure, it is endostyle. This endostyle is having alternately arranged ciliated and glandular tracts. Here 5 ciliated tracts, 1, 2, 3, 4, 5 ciliated tracts and 4 glandular tracts which are alternately arranged. This median ciliated tract is largest. The endostyle secretes huge amount of mucus, and that mucus is thrown on the lateral side of this pharynx, and that mucus traps the food particles. The food particles and mucus move in the forward direction by the beating of these frontal cilia of gill bars. As a result, the food reaches in this epipharyngeal groove. The beating of cilia of epipharyngeal groove and the lateral cilia of gill bars, food is passed in the esophagus. Finally, the food enters in the intestine.
The midgut diverticulum, midgut lining and hindgut lining having glandular cells. These cells secrete digestive juice. In these juice, following types of enzymes are present: amylases, lipases, proteases. Amylase enzyme is responsible to break the starch into simple sugars. Lipase enzyme is responsible to hydrolyze the lipid into glycerol and fatty acids, while this protease enzyme is responsible to convert the proteins into simple amino acids. Digestion of food, that is partly extracellular and partly intercellular, while the absorption that occurs by simple diffusion method, and it mainly occurs in the hindgut, while a small amount of food gets absorbed in the midgut diverticulum. बेटा ये सब जितने भी नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं और ये लेक्चर यहाँ आज ओवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे। थैंक यू।